Welcome back everyone. Now it's time for us to start with a very important question of this chapter. That is the question based on division. Practice at 3.2, question number 5. The question is, divide first polynomial by second polynomial and write the answer in the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now students, this is a question which we have studied already in standard 8. Same type of question. Only 2 questions are there, out of which we are going to do the first one. Second one you are going to solve by your own. It's quite simple. थोड़ा सा lengthy है, but very interesting. If you know one step how to solve, वही step हम लोग को repeat करना है. So let's see what we need to do over here. The question says divide the first polynomial. This is the first polynomial given to us, x cube minus 64, which we need to divide. The polynomial which we need to divide, that polynomial is called as dividend. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Dividend, जिसको हम लोग को divide करना होता है. And students, dividend जो भी है, that dividend should be always and always in index form. Dividend कौन से form में होना चाहिए? Index form में होना चाहिए. What is index form? Index form means starting from highest power to lowest power, each and every term should be present. If it is not, तो हम लोग को convert करना पड़ेगा. As you can see, raised to 3 के बाद raised to 2 is missing, raised to 1 is missing. So yes, we need to convert this into index form. So after x cube, there should be square वाला term, but it is missing. So we are going to introduce it with the help of 0. We will add plus 0x square. Raised to 1 वाला term is also missing, that is variable term. So that also will add plus 0x. And at the end, constant number is given to us, that is minus 60. So it is necessary to introduce the missing term over here while doing the division of the sum. And we need to divide this polynomial by the second one. इससे divide करना. So the polynomial by which we divide, जिससे हम लोग divide करते हैं, that is called as what? Divisor. So this is a divisor given to us. Let's write the divisor as it is. Just make sure divisor जो होगा ना, उसको हम लोग standard form में लिखेंगे. मतलब अगर कोई term missing है, तो उसको introduce करने की जरूरत नहीं. We'll keep it as it is. Standard form में खाली लिखना है. So dividend in index form, divisor in standard form. Dividend में हर एक term present होना जरूरी है. So we are going to solve this by long division. Long division का ऐसा symbol, जहाँ पे we are going to write dividend inside, divisor outside. Whenever we are solving this divisional sum, students, always do rough work. आप लोग नए पेज पे सॉल्व करना, फ्रेश पेज पे, तो ऊपर से आप लोग सॉल्व करोगे, उसी पेज पे नीचे से 10 लाइंस लेके आप लोग ना रफ वर्क बनाना. अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, तो आई एम डूइंग ऑन द राइट हैंड साइड. बट जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे, स्कूल में, क्लासेस में, जो भी एग्जाम में आप लोग लिखोगे, मेक श्योर दैट फ्रेश पेज पे आप लोग लिख रहे हो. रफ वर्क नीचे से 10 लाइंस लेके रफ वर्क करने का 2 पार्ट में. सो अभी रफ वर्क में करना क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बाय डिवाइडिंग polynomials. We need to divide the first term of dividend. Which is the first term of dividend over here? It is x cube by the first term of divisor. Divisor का first term उससे divide करना. So which is the first term of divisor? Yes, it is x. So we need to divide the first term of dividend. तो rough work में हम लोग लिख रहे हैं x cube, first term of dividend, by the first term of divisor, that is x. Now let's divide this. सिंपल डिवीजन हम लोग को पता है, कैंसिलेशन कैसे करते हैं. पावर कम करना है, ऊपर रेज़ टू 3 अपॉन में रेज़ टू 1 है, तो रेज़ टू 3 में से रेज़ टू 1 गया, 3 माइनस 1 कितना बचेगा? x स्क्वायर इन द न्यूमरेटर. सो दिस इज द आंसर, x स्क्वायर. सेकेंड स्टेप, वट एवर आंसर यू आर गेटिंग, दैट आंसर वी नीड टू राइट इन द क्वेश्चन, ऊपर लिखना है. ठीक है. स्टेप नंबर 3. Now we'll draw line in between, रफ वर्क यहाँ पे. स्टेप नंबर 3, जो भी हम लोग को आंसर मिला है x स्क्वायर, that answer we are going to multiply
with entire divisor, पूरे के पूरे divisor के साथ multiply करना है. So divisor is what? X minus 4. Since there are two terms, let's write down this in bracket x square into this bracket x minus 4, the entire bracket. So step number 3, multiply the answer with entire divisor. Let's multiply. We know how to multiply, right? X square should get multiplied with each and every term of this bracket. X square into x, that gives you x cube, power gets added. X square into minus 4, that is minus 4x. Step number 4. Now whatever answers we have got over here, that answer we are going to write below like terms. Like terms के नीचे लिखेंगे. X cube के नीचे, square वाला term के नीचे. Now this is the reason why it is necessary to write the dividend in index form. Because देखो अगर आप लोग dividend index form में नहीं लिखते ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि आगे जाके अगर ऐसा कोई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तो ये स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे लिखना है. माइनस फोर एक्स स्क्वायर किसके नीचे लिखना है, वहाँ पे तो कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, राइट. तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है किधर भी लिखते तो इट्स नेसेसरी टू राइट डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म सो दैट आगे जाके हम लोग जो भी आंसर है लाइक टर्म्स के नीचे लिख सके. तो एक्स क्यूब के नीचे स्क्वायर वाला टर्म के नीचे अलॉन्ग विद द साइन. एंड नाउ लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन. While doing calculation of this, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करके अभी यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दिस टू पॉलिनोमियल्स. सो विल ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग दिस टू साइन चेंज. तो सेकेंड पॉलिनोमियल का हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा. दिस प्लस एक्स क्यूब विल बिकम माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर विल बिकम प्लस 4x स्क्वायर. साइन क्यों चेंज होता है, एज वी हैव सीन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में जो भी पॉलिनोमियल ब्रैकेट के माइनस साइन के बाद लिखा है उसका साइन चेंज होता है. सो जो आगे लिखा हमने पॉलिनोमियल जो आंसर लिखा है वो माइनस साइन के बाद मतलब सब्ट्रैक्ट करे तो उसके लिए उसका साइन चेंज करना पड़ेगा. एंड हियर द फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज गेट कैंसल, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट्स कैंसल, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. Next two terms 0x square minus 4x square, minus 4x square now become plus 4x square. तो न्यू साइन आप लोग को देखना है, प्लस एंड प्लस ऐड करना है. 4 plus 0 सेम ही आंसर आएगा, that is 4x square. Plus 0x and minus 64 as it is, so let us carry down as it is. उसके नीचे कोई आंसर नहीं है. After this again we need to follow the same steps. अभी सर हम लोग को कब तक डिवाइड करना है, जब तक डिविडेंड का डिग्री, डिविडेंड का हाईएस्ट पावर डिवाइजर के पावर से कम नहीं होता तब तक डिवाइड करना है. डिविडेंड का हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 2, डिग्री इज 2, डिवाइजर का हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 1. तो डिविडेंड का पावर डिवाइजर की पावर से जब तक कम नहीं होता है तब तक आप लोग को सॉल्व करते जाना है. सो इट इज 2 not less than 1. तो अगेन हम लोग को सॉल्व करना, अगेन फॉलो द सेम स्टेप्स. सो व्हाट आर द 5 स्टेप्स. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड. नाउ दिस इज अ डिविडेंड, द फर्स्ट टर्म इज 4x स्क्वायर, रफ फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, इट इज x नाउ. सो लेट अस डू द डिवीजन. 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर में से एक x गया तो बचेगा ओनली x. सो द आंसर इज 4x. ओके, सो दिस आंसर step number 2 we are going to write in the question. 4x का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, so let plus 4x. After this step number 3, multiply this answer only this 4x with entire divisor, पूरा का पूरा divisor. So रफ होके सेकंड पार्ट में हमने लिखेंगे 4x into पूरा का पूरा divisor x minus 4. Now let us open the bracket. This 4x will get multiplied with each and every term. 4x into x, x into x, that is x square, 4x square, minus 4 4s are, that is 16x. Step number 4, write down this answer below like terms, raised to 2 के नीचे x वाला टर्म के नीचे. And the last step, calculation. So we are going to subtract these two polynomials now. While subtracting, leave one line and change the sign of the next polynomial. Plus 4x square will become minus 4x square, minus 16x will become plus 16x. So sign changes.
Now while doing the calculation, second polynomial का आप लोग को न्यू साइन कंसिडर करना है. प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल ऑलवेज गेट कैंसिल. स्टार्टिंग वाला टर्म 0x के साथ कुछ भी सॉल्व करो, आंसर वही आएगा जो सामने है. 16x plus 0x. 16x का साइन इज प्लस, so let this 16x as it is, 64 as it is, minus 64 will carry down. Still you can see dividend में the highest power is 1, x का power 1 and divisor का power 1. It is not less than divisor. So one more step we need to do. Again follow the same steps, 5 steps. Which is the first step? Yes, divide the first term of dividend, that is 16x, by the first term of divisor, that is x. So 16x upon x, x cancel, directly बचेगा 16. Step number 2, write down this answer in the quotient. तो 16 यहाँ पे जो हम लोग को आंसर मिला है उसको लिखेंगे क्वेश्चंट में. Step number 3, multiply this answer, this 16. We are going to multiply with entire divisor. So 16 into पूरा का पूरा divisor. Let's multiply this 16 into x, 16x, minus 16 into 4, 64. Step number 4, let us write down this answer below like terms. 16x, 16x के नीचे 64, 64 के नीचे. Now it is quite interesting. यहाँ पे हम लोग को सेम आंसर मिल रहा है. Last step, calculation. Sign changes. So leaving one line, sign change करना है. Plus will become minus, minus will become plus. Here plus 16x, minus 16x. First term will always get cancelled. And here you can see आगे भी यहाँ पे cancellation हो पा रहा है. Minus 64 plus 64, that is again cancelled. So nothing is there. What remains over here is 0. So this time you are getting 0 in the dividend. जहाँ पे variable is not there, मतलब उसका power obviously 0 हो गया है. So it is less than the divisor. So we need to stop our division over here. This is the final answer. But still, read the question properly. वहाँ पे क्या बोला है? Divide and write the answer in this form. That is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So if you don't write this in this form, you lose half or 1 mark. So don't forget to write this answer in this form. Dividend. What is dividend? Which is inside this sign. Dividend को हम लोग को लिखना है. Dividend कौन सा लिखना है जो क्वेश्चन में दिया था, वो वाला डिविडेंड लिखना है. ठीक है. Is equal to divisor. Again divisor कौन सा लिखना है जो क्वेश्चन में दिया था. In bracket into quotient. Quotient means यहाँ पे ऊपर जो हम लोग का आंसर दिख रहा है x square plus 4x plus 16. ऊपर यहाँ पे जो आंसर है उसको हम लोग बोलते हैं quotient. Let's write down this in bracket. Plus remainder. Remainder मतलब यहाँ पे लास्ट में हम लोग को जो आंसर मिला 0. This is called as remainder. Plus 0. And we'll keep it in a box for better presentation. I hope this is clear to each and every one. Question थोड़ा सा लेंदी है students, but once you solve, थोड़ा सा practice करोगे आ जाएगा. 8th standard में आप लोग ने already इस type की sums पढ़े हैं. पूरा का पूरा exercise इसके ऊपर depend था. So if you are very much clear with the concept of 8th standard, ये तो आप लोग को बहुत easy लगी. So that's all for the day. Thank you so much everyone. I hope you enjoyed this session. That's all for the day. Thank you so much. This is Ajay sir here signing out.